अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। ये अभी मैं ग्लस्टरशायर में हूँ। ये RAF फेयरफोर्ड का जो है एयर शो है, RAF का मिलिट्री एयर शो। और इसकी डेट जो है ये 18 से 20 जुलाई को हर साल डेट एक आध दिन का चेंज होता रहता है, लेकिन 2025 में इसकी डेट जो है वो 18 से 20 जुलाई तक थी। 18 तारीख को ज़्यादातर जो हैं वो एयर फोर्स के ऑफिसर्स जो थे, तकरीबन 27 कंट्री से जो आए हुए थे, उन्होंने इसमें शिरकत की थी। उसके बाद सैटरडे और संडे जो था वो आम पब्लिक के लिए था। और यहाँ पे तकरीबन 250 एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया था, जो कि 27 डिफरेंट कंट्री से आए हुए थे। और इसकी जो टिकट है आम लोगों के लिए वो तकरीबन 45 पाउंड थी, और अंडर 18 जो हैं वो इसमें फ्री हैं। एक एडल्ट के साथ अनलिमिटेड बच्चे आ सकते हैं, जितने भी आ जाएं, कोई उनको इशू नहीं है। और यहाँ पे जो भी ट्रेन स्टेशन है वहाँ से जो है वो आपको शटल बस सर्विसेज भी वो मिल जाती है। अगर आपने बच्चों के फैमिली के साथ आना है तो सैटरडे संडे बेस्ट डे है यहाँ पे आने के लिए। तो ये जो एयर शो है, इस दफ़ा इसका जो थीम था वो ये था कि आई इन द स्काई, कि स्काई में सबसे एक्टिव जो है आइज़ वो किसकी है। और इसमें जो है तकरीबन इस साल जो लोगों ने विज़िट किया इस शो को, उसमें 1.5 लाख से 2 लाख लोगों ने इस शो को विज़िट किया था। और ये दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री का एयर शो होता है, और ये तकरीबन पिछले 40 साल से यहाँ पे ये शो हो रहा है। तो इस साल जो है इस शो का जो आन बान शान शो की थी वो पाकिस्तान की बेस थी। पाकिस्तान के 4 यहाँ पे जहाज़ आए थे, जिसमें C-130 था, JF थंडर था, और एक जो है वो कार्गो था। तो ये पूरे जो शो की जान था वो पाकिस्तानी बेस ही था। वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो विज़िट किया गया लोगों का। और इस शो का इस दफ़ा का 2025 का अवार्ड जो है वो भी पाकिस्तान को ही मिला है। कि अगर सादा लफ्ज़ों में मैं बोलूँ तो उस ट्रॉफ़ी का मतलब है कि मशीन को अगर किसी ने इस्तेमाल करना सीखना है तो वो पाकिस्तानी एयर फोर्स से सीखे कि मशीन को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, और उसकी प्रेजेंटेशन, मतलब जिस तरीके से उसको उन्होंने प्रेजेंट किया और इस्तेमाल किया। तो ये मेन ट्रॉफ़ी थी। और दूसरी ट्रॉफ़ी जो मिली थी पाकिस्तान को, वो मिली थी कि जो एयर शो का थीम था उसके ऊपर जो सबसे अच्छे तरीके से जिन्होंने वर्कआउट किया वो पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट्स थे। तो आइज़ इन द स्काई वाले थीम के ऊपर जो सबसे अच्छे और बेस्ट तरीके से जो काम किया गया था वो पाकिस्तानी नेशन ने किया था। तो ये 2 अवार्ड जो हैं वो पाकिस्तान को मिले। तीसरा अवार्ड की नॉमिनेशन जो है वो मुझे जो ग्राउंड पे क्रू था उन्होंने बताया था कि वो भी पाकिस्तान को चांसेस हैं मिलने के संडे को, कि सबसे ज़्यादा जो बेस व्यू की गई वो पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट की बेस को लोगों ने व्यू किया। तो वो 3 बजे नॉमिनेशन थी, लेकिन मैं ये शो को 2 बजे वहाँ से निकल आया था। तो मुझे नहीं पता कि वो तीसरी ट्रॉफ़ी भी पाकिस्तान को मिली है कि नहीं मिली, लेकिन अगर किसी को इन्फॉर्मेशन है कि वो तीसरी ट्रॉफ़ी, तो वो कमेंट्स में आके मुझे बता सकता है कि तीसरी ट्रॉफ़ी भी पाकिस्तान को मिली है कि नहीं मिली। लेकिन जो मतलब इस शो की जो आन बान शान और शो को 4 चांद लगाने में जो सबसे बड़ा किरदार है जो सराहा गया है वो पाकिस्तानी एयर बेस को सराहा गया है। और थीम के ऊपर जिन्होंने सबसे अच्छे तरीके से काम किया, जो एयर शो का थीम था वो पाकिस्तानियों ने उसके ऊपर सबसे अच्छे तरीके से काम किया। और ऑलमोस्ट जो है सबसे ज़्यादा जो बेस व्यू की गई और जो एयरक्राफ्ट व्यू किए गए वो पाकिस्तानी बेस ही थी।
तो सब लोगों को मेरी तरफ से पाकिस्तानी कौम को भी बहुत बहुत मुबारक हो इस ऑनर की कि यूके में जाके आप इतनी बड़े अवार्ड से आपको अल्लाह ताला की ज़ात ने नवाजा। तो इस सब के लिए सबको अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआगो होना चाहिए। Only get the red one. Let's see, is a stay on it or no? Wow, that's good. Those would be for the top bit. That's for the tail bit. ये फायर ब्रिगेड जेट है। ये सारे लोग क्यू में खड़े हैं अंदर जाने के लिए। पहले आपको वहाँ सामने इनका डेस्क बना हुआ है, वहाँ आप जाके अपनी सीट रिज़र्व करवाएं। उसके बाद ये जहाज़ के अंदर का आपको व्यू करवाते हैं, बिजनेस क्लास और पायलट वाले एरिया का सारे पूरे जहाज़ का आपको करवाते हैं। ये वो वाले हेलीकॉप्टर हैं, छोटे जहाज़ जो हम बाली वगैरह के बीचेस के ऊपर देखते हैं, आयरलैंड के ऊपर जो वो आइलैंड बने हुए हैं और वहाँ पे वो पैसेंजर्स वगैरह को गेस्ट को लेके जाते हैं पानी में, जो वो फ्लाई करते हैं पानी के ऊपर, मतलब लैंड करते हैं और डिपार्चर करते हैं।
Yes, yes. Well, in case you were wondering, we're randomly playing around sounds of birds on thundering radar. Performed a flying display ये रेंज रोवर वाले अपने करतब दिखा रहे हैं इधर. Apache, two of them lining up on the runway with the Wildcat. They'll be getting airborne to go. ये कतर का मिलिट्री जब वो है मतलब वो कार्गो के लिए जो यूज़ करते हैं इसके अंदर टैंक वगैरह और मिलिट्री इक्विपमेंट वगैरह जो है वो लोड करके कैरी करते हैं. Some of these small drones are manufactured synthetically based on their factory airfield in Hercules in Sweden. And it's a demonstration that really showcases the extreme, outstanding manoeuvrability of this type and the power produced by. ये वो जो सामने आपको वो फाइटर जेट्स खड़े नज़र आ रहे हैं वो सारे परफॉर्म करेंगे अभी लेकिन पाकिस्तानी वो पायलट से मैंने पूछा तो वो लोग परफॉर्म नहीं कर रहे हैं. वो सिर्फ यहाँ पे मतलब अपनी बेस पे आए हैं मतलब स्टैंड बाय हैं और यहाँ पे वो अपनी लेके आए हैं 4 जहाज़ और सिर्फ एग्ज़िबिशन को ज्वाइन करने के लिए. ये सारे यूके के जो हैं वो ओल्ड शाहीन हैं सारे. ये तो कोई बहुत ही नायाब सी चीज़ है. वो जैसे गाड़ी के आप पार्ट्स ऑर्डर करके उसको असेंबल करते हैं, मुझे लगता है ये भी कोई उसी तरह की चीज़ है. ये सारे खाने के स्टॉल हैं. वो सामने देसी ढाबा के नाम से भी एक स्टॉल लगा हुआ है. वहाँ से कल मैंने बिरयानी ली है. वो इंतहाई फजूल थी, 16 पाउंड की थी. पोर्शन भी बहुत ही छोटा था लेकिन चलो वो तो एक डिफरेंट बात है लेकिन टेस्ट तो हो ना कम अज़ कम. इस वाले शो में और फानप्रो के शो में ये डिफरेंस है कि ये आर्मी से रिलेटेड ज़्यादा है. मतलब यहाँ पे ज़्यादा आपको मिलिट्री से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी. वो जर्नल एरोस्पेस से रिलेटेड उसमें सारा का सारा कुछ होता है फानप्रो के अंदर. Used for the back of the Bambi bucket and the sun just last year was a very good example when there was a major. ये इन्होंने यहाँ पे एक ऊंची जगह बनाई हुई है जहाँ पे चढ़ के सारे लोग तस्वीरें वगैरह बना लेते हैं. Close to the German border and they were called upon to help fight back. Now back into form.
और वो एक इनका वो कार्गो है और ये रीफ्यूल भी करता है इनको जेट फाइटर जेट को। तो ये मुझे अभी बता रहे थे कि ये रास्ते में 2 दफ़ा इनको रीफ्यूल करेगा और रेस्ट के लिए ये लोग जो हैं वो टर्की में रुकेंगे। September in April 2023, cooperation. जॉर्डेनियन उनका ये पवेलियन है और ये सामने इनका आर्मी का Like a big screw, big bolt, because it's sliding place. Those would be for the top bit. That's for the tail bit. Right, 2 screws in there. For the white bit. And then after that, it's 10 months to go away how to make it tight at the end. this Do you know how side. to do that? Do you know how to do it? Get one of these. No, nothing stamped. You basically they give you cards at the end of your task. ah look at that. Wow, look. Checking some kind of aluminium and inside I don't know what is inside of the aluminium. Oh, okay, let's see what's going on. He is going to open, so let's see. Is a fly? No? Okay, now I'm just turning around 40-45 degree. So let's see, is a stay on it or no? Wow, that's amazing. Ah. Only get the red one. Couple of seconds. Second. Wow. Amazing. While holding it. No. So. And the second, no. Second ball is. Oh. It does get a little bit messy, but Oh. well, I'm struggling now. There you go. Oh. And then, if you really want to, you can try and add a second ball in, but it gets very, very messy. But you can Try it. Right, Try yeah, it. okay. Yep. I'll do it.
Wow, done. that's amazing. Try third one. Wow, what an amazing thing. Magic, Nope, nope, just science, just physics. just science. Just physics, just airflow. Magnetic kind of thing? Nope, Nope. just airflow. Just airflow. You want to have a go? Oh, okay, right, that's one line, that's good. I'm almost inclined to say that was a first one. I don't know if that's just I feel like I didn't see a way to almost like a formula sort of thing that you can work out. You can like work out To maritime speed. We'll also be testing your observation skills in anything intact. To using complex code sequences to plot your route and navigate successfully. अमेज़न कन्वेयर बेल्ट जो यूज़ होती है वेयर हाउस में, ये अमेज़न प्राइम वालों का भी स्टॉल है। अमेज़न प्राइम एयर और अमेज़न प्राइम की बीच चेयर भी है, और ये उनका ड्रोन्स से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो भी सारी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई गई है। MDA स्पेस वालों का स्टॉल है। ये देखें ड्रोन कितना परफेक्टली ये इनका ब्रीफिंग सेंटर है। जो भी एरोस्पेस से रिलेटेड यहाँ पे जिनके स्टॉल्स हैं तो वो अपनी प्रोडक्ट के रिलेट आपको ब्रीफ यहाँ पे करेंगे। ये सेम वही फानब्रो एयर शो की तरह हर किसी ने अपने अपने जो है ना वो डेस्क लगाए हुए हैं और अपनी प्रोडक्ट के बारे में आपको ब्रीफिंग देंगे। लंदन फेमस आइसक्रीम वैन भी इधर आई हुई है एयर शो के अंदर।
Army Air Corps display teams depart for the whole of South Durham were mentioned about a very small but very important part of the volunteer team here at Riat. That is the Flight Control Committee. It's a group of highly experienced serving and former RAF pilots and navigators. To break effectively speed back from 350 knots back to 150 in positioning, coming back down the display line, the low speed pass. The Riat is the single-seat model of the new generation Hercules. Air is the two-seater. Compared with the earlier C and D models, the aircraft can carry a greater weapons load, it's longer range, it's about 30% more engine thrust than the earlier C model, and 30% more internal fuel, and it accelerates much more quickly at all altitudes.
in for an inverted pass. Beautiful, beautiful. टाइम वेस्ट करने का बेहतर से काम चला गया Under the operational control of wings organised on a regional basis, this one comes to us from Fighter Squadron 11. नहीं वही है और टाइम लैंडिंग है लास्ट जड़ी है ना जो भी उन्हें एक्टिविटीज़ करनी है हाँ जी हाँ Since the GR4 went out of service, it really has been the fun to landing. बोले साफ करो नजर नहीं आ रहा
so others may live, and that they've certainly lived up to, both with their previous equipment, the Puma, and now this, the Merlin. And this is another part of our Eyes in the Skies theme, because search and rescue helicopters very much a part of that. Then return on to the 45-degree line. Now back onto the A axis for an inverted pass. Second roughly, entering that at about 380 knots, which is the optimum speed for full deflection of the flight control system. Now, when aircraft like the F-16 and the FA-18 started appearing at air shows and started performing these slow-speed passes, they were like nothing we'd ever seen before from a conventional fixed-wing fighter, were they? Yeah, absolutely, and you need a full fly-by-wire system in order to make this as impressive as it looks here. Immediately pulls them up and twists them around to the right, which indicates to me he's taken the show rolling. You can see that topside pass of the amateur big battle, and soon you'll see the aircraft start to collapse and form our world famous Diamond 9. Leading the team for his second year as Red One, the team leader is squad leader John Bond, known as Bundy. He's been in the Red Arrows for 7 years, his second year as the team leader.
He's a former Typhoon pilot, former qualified flying instructor on the Tucano, as well as flying the Tucano display in 2012. Ladies and gentlemen, boys and girls, once again in our Diamond 9 from the right, it's the Red Arrow. Go. On the right of Red 1 is Red 2, Flight Attendant Bob Thomas. Bob is in his first year of the team. Uniquely, he was taken from training as a student and made straight into an instructor role on the Hawk T-Mark 1, before then completing his own training, joined the Typhoon Force. You can hear those commands from Red 1, they're almost robotic and monotone in the way that he delivers them. And that's because we fly our formation by ear rather than by eye. That means all the pilots put their control column on certain words that the Red 1 commands, and then 8 and 9 on the outside puts them in just a little bit earlier than those on the inside. 8 and 9 now collapsing behind Reds 2 and 3 for one of the most iconic shapes in aviation history. The smoke comes on. This is Concorde. On the left-hand side of that centre stem is Red 3, Flight Attendant Andrew McEwen, known as Macca. Macca is in his first year of the team. He flew the 88 Phoenix, the Harrier variant, with the United States Marine Corps before they coming back to the UK, joining the world-famous 617 squadron based at RAF Marham, where he flew the Royal Air Force latest fighter, the 5th generation F-35B. 11 pilots on the Red Arrows, as I said, mentioned Wing Commander Adam Collins, Officer Commanding RAF, myself, Red 10, former Tornado. All the way at the back of that formation on the right-hand side, working extremely hard is Red 4. One of the hardest positions to fly, because he's on to look through the entire formation at Red 1. We take all our formation references. Red 9 off to the right-hand side is Flight Attendant Ollie Suckley. Ollie's in his third year on the team, a former Tornado GR4 pilot, former qualified flying instructor on the Hawk T-Mark 2. Right to spear the heart is Red 8, Flight Attendant Rich Walker, a highly experienced operator, having flown Typhoon and Harrier, as well as being a qualified flight instructor on the Hawk T-Mark 2. Amazing hard. Let's give the synchro pair and Red 8 a massive round of applause for Wonderful Heart in the Skies of Riat. And one of our former engineering officers, Wing Commander Chris Phipps, would like to dedicate today's heart to his mum Joan and his sister Ali. You can see Enid running wing with Reds 8 and 9. Once again, Red 1 pulls them up at over 400 miles per hour. He'll roll to the right. Another fantastic photo opportunity for the vertical break. Flying with a sustainable smoke fuel. It's hydro-treated vegetable oil. It's 100% blend. The Red Arrows are the first and only team to use both renewable aviation fuel and smoke fuel. The smoke fuel promotes innovation, British excellence, and of course that reduces our emissions and is better for the environment. And as I said, we are one of the first, if not the first team, to use both sustainable fuel and smoke. Reds 2 and 3 move up alongside Reds 1. They're looking 90 degrees along their shoulder line, working extremely hard, pulling up to 3G, keeping that turn on 3 to 4G, coming in from the right. The smoke comes on in the Tango.
excellence. We're striving for excellence in everything that you do, whether you've been on the team 1 week or 4 years. In from the left, red 6. Keep looking to your left, keep looking to your right. You're looking for the synchro pair. This time red 7 coming in from the left, red 6 coming in from the right. Once again, that close speed of over 900 miles per hour. Each aircraft a 400 barrel. Before crossing, once again, it's only 30 metres apart, wingtip to wingtip. Each aircraft now pulling up to 6G. That means everything about them is weighing 6 times heavier than what you and I as you stand on the airfield. Red 7 working hard to make sure he misses red 6. The colour goes from blue to red to blue, as that 6G turn comes on, as the synchro pair complete the circus. Six and 9 roll inverted in the chainsaw. Red 6 and 9 working extremely hard upside down for nearly 30 seconds. All manoeuvres for our new pilots to master each year. This is RAF. को तो क्रॉस नहीं कर रहे। As the synchro pair return, because ladies and gentlemen, you've been watching the 2024 Use A1 in the civilian world, or ABTUR, which is aviation turbine fuel. Apologies for the short notice there. We were told it was going to be on the hour. 207 Squadron at Mara. And that's the operational conversion unit for the UK's Lightning Force. We're going to see the aircraft turning back onto the runway heading. काला डिनर है। अभी सारे जर्नल्स इधर खड़े हैं, आर्मी से रिलेटेड पर्सन्स हैं। ये उनको उनकी सलामी देने के लिए ये नायाब किस्म का त्यारा आया है।
So the English translation for Sokol is Falcon. It's a medium-sized, twin-engine, multi-purpose helicopter designed and manufactured by Polish helicopter company PZL Świdnik, now owned by Leonardo. It was the first helicopter entirely designed and produced in Poland. Number one, and they'll be coming back in to conclude this really, really well choreographed and well executed display. Massive coups coming in.
सबको बाय बाय कर रहा है वो पीछे से बैठ के।
Red 6 and 8 go off to our left-hand side. Red 8 hard. And coming in from the top right-hand side is Red 8 as he spears hard. Red 8 is by Lieutenant Rich Walker, and he's very experienced aviator. He's flown Harrier, he's flown Typhoon, and he's also been a qualified flying instructor on the Hawk Team of 2. लो जी लव यू हो गई है Let's get